बेसिस और बेसिस, ठीक है। तो बेस और बेसिस दो नाम है इसके। सो हाउ डू वी डिफाइन बेस ऑफ अ टोपोलॉजी, ये हम कर चुके हैं। कोई रिकॉल कर सकता है व्हाट इज द बेस? हेलो, आप लोग शांत क्यों हो जाते हैं? अनुराग? Yes, sir. Define Hello. base of a topology. Define base of a topology. Sir, all unions of open sets, sir. क्या? All union of open sets? उसको सही से आप जब तक समझेंगे नहीं उसको रटने की कोशिश मत करिए। आप लोग, मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग रटेंगे तो आपको नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, ठीक है। इसको समझिए, आपको जरूर आएगा। कोई और? Sir, all members of सरोज tau can be expressed as union of. यूनियन ऑफ, ये तो आप पढ़ के बोल रहे ना अभी? Yes, sir. अब हाँ, तो पढ़ने के बाद भी वो पढ़ के तो मैं भी बोल सकता हूँ, कोई और बोल सकता है। दीपक गौतम? सर हेलो। हाँ, सरोज बोल रही है, बोलिए। सर टाउ हमारा कोई अगर जो टोपोलॉजी है उसके कुछ एलिमेंट्स लिए जाए या फिर उसका सब कलेक्शन लिया जाए और उनके कुछ एलिमेंट्स का यूनियन जो होता है वो हमारा बेसिस होता है उस टोपोलॉजी का। फिर से आपने भी केवल इसको रटा है ऐसा लग रहा है। हाँ, फिर से देखते हैं क्या है। हाँ हाँ हाँ, बोल रहा, बताइए। सर आपका नाम? अगर कोई एक मिनट पहले इनको बोलने दीजिए, वो बात अपनी खत्म नहीं करो। पहले अपना नाम बताइए फिर बोलिए। बोलिए। सर हाँ, टाउ प्रीतिया बताइए। लॉजिकल स्पेस हो और इसका टाउ हम कोई मींस कलेक्शन एक्स ले लें, टाउ। सब कलेक्शन जिसको हमने, हाँ ये सब एक कलेक्शन किसका लेना है? टोपोलॉजिकल स्पेस सर टाउ के। सब कलेक्शन टाउ का लेना है, ओके। और So, अगर हम टाउ उसको हमने एक नया नाम दे दिया बीटा। अब अगर बी नाम दे दो। टाउ, यस सर। अब अगर हाँ। टाउ के हर एक एलिमेंट को बी के जो एलिमेंट्स ले उनके यूनियन में एक्सप्रेस कर सकें तो हम हाँ, बी को टाउ का बेसिस पाएंगे। बेसिस कहते हैं, हाँ, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ओके। सो दिस बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके, कलेक्शन। सो अब कलेक्शन ऑफ सेट्स है ये, ठीक है। मींस दिस इज the this B is collection of subsets of X, and it is contained in tau. Okay, you all know tau itself is a collection of subsets of X. Okay, is a base for tau if every element of tau, or you can say every open set, okay, दोनों सेम चीज है, every open set of the topological space X tau, okay, element of tau are open sets of the topological space X tau, correct, can be expressed as a union of some members of B. So if this happens, then we say this B is a base of tau. Okay, हमने कुछ एग्जांपल्स दे दें। So for example, open intervals
in the usual collection of open, call it collection of open interval in the usual topological space are tau. Okay, so you all know what is usual topology in the set of real numbers. Okay, we have discussed this. Collection of open intervals in the usual topological space are tau is the base for tau. क्यों? Because already seen in your BSc and MSc first semester that every open set in R with the Euclidean metric, okay, is okay, can be expressed as a union of open intervals. Okay, so in this way, the collection of open intervals in this topological space, which is called usual topological space or standard topology or Euclidean topology in R. Okay, so this is the base. So another example, so any topology itself be a base. Okay, कोई भी topology आप लोग वो एक base हो सकता है. Okay, by definition this is a base. Any topology tau on a set X is itself a base for tau. Okay, so from here you see we can have many bases for the same topological space. Okay, for this topological space R tau, we have this is a base, the collection of open interval, but tau itself is a base. Okay, so we have at least two bases for the usual topology on R. Okay, so let us see another example. Take x equal to 1, 2, okay, and define tau as empty set x 1, 2. Okay, so here x equal to 1, 2. So this is the topology, correct? Then you see tau itself a base. Tau itself a base by above example. Tau itself is the base for tau. Can you tell me another base other than? Can you tell me a base other than tau? Any other base? Can you tell me? प्रिया भारती आप बता सकती हैं? सर x भी तो हो सकता है. हाँ, पाई और x भी x तो हो सकता है और उसके जो एलिमेंट है वो भी हो सकते हैं. सर जितनी वो टोपोलॉजी रखेगा सर उतने उसके बेस होंगे शायद, आई थिंक. पहले आप बेस की डेफिनेशन को समझिए. पहले बेस की डेफिनेशन क्या कह रही है? कोई भी एलिमेंट आप x का लेंगे, सॉरी टाउ का लेंगे, ठीक है. एवरी एलिमेंट ऑफ टाउ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ b. अब आप कह रहे हैं कि b को मैं केवल x ले लूं. ओके, एम्प्टी सेट के केस में ओके, कोई दिक्कत नहीं है. एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी यूनियन ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ बी कह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट वन को कैसे लिखेंगे आप? यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ एक्स, क्या आप लिख सकते हैं वन को यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ एक्स, सॉरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी? सर इसमें फाइव और सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 ले तो सब बेस हाँ, बने। if you take b equal to 1 comma 2, then you can write phi is phi union of empty sets, okay, union of empty collection of sets. So you are not taking anything and take its union, then you will get empty set. So empty set is okay. What about 1? So 1 can be written as 1 union 1, okay. 2 is there in B, so 2 can be written as 2. What about X? X can be written as 1 union 2, and both 1 and 2 are in B, okay. So every member of this topology tau can be expressed as a union of members from B, okay. So this B is a base for tau, okay. Do you see my point? Hello, Yes, sir. is it okay? So what about हेलो this topology? हाँ, सर, मेरा पॉइंट ये था कि जैसे ये आपने जो इसमें दो एलिमेंट आपका लिए थे। सर अनुराग भारती। आपका नाम क्या है? हाँ अनुराग, क्या पॉइंट था आपका? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इसमें एक्स आपने एक सेट लिया था तो उसके 4 टोपोलॉजी सर इसके बन सकते हैं, टोपोलॉजिकल भैया, स्पेस मैंने बन यहाँ सकते हैं पर मतलब क्या इस सेट के। अनुराग, यहाँ पर टाउ गिवन है आपको, आप हर एक टोपोलॉजी के लिए अलग अलग बेस हो सकता है ना। मैंने आपको एक यस सर। टोपोलॉजी फिक्स करके दी है, उसके लिए मैंने बेस मांगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी टोपोलॉजी के लिए होगा। हाँ, आपने जो बोला एक्स एक बेस होगा, बट वो कोई दूसरी टोपोलॉजी है, ठीक है। वो इस टोपोलॉजी का बेस नहीं है। वो किस टोपोलॉजी का बेस है देखते हैं। नाउ take x equal to 1 comma 2, take tau 1, okay, tau 1 is empty set and x, okay. Then this tau 1 is itself a base. Can you tell me another base for tau 1? Take x, this is another base for tau 1, okay, because empty set can be written as a union of empty family. So this is very vacuous. Vacuous की spelling क्या होती है? VACOUS, okay, or yes, but x can be written as x, okay. So in this case you have two bases. Now take another example. Same x equal to 1 comma 2, tau 3, okay, tau 2, empty set x and 1. This Sierpinski space. What is the basis? Can you tell me a base for tau 2 other than tau 2? Base other than tau 2. अर्पित, आप अपने को म्यूट करिए।
ओके बताइए, कोई बेस टाउ टू के अतिरिक्त? अभी तो आपको डेफिनेशन मालूम है ना? अनुराग, यस सर। हेलो, हाँ, टाउ टू के अतिरिक्त कोई दूसरा बेस बताइए। सर 5x2 भी तो ले सकते हैं। अनुराग, आप बहुत कंफ्यूज हैं क्या? मैंने आपको एक टोपोलॉजी फिक्स करके दी है। टाउ टू एक टोपोलॉजी है, उसमें कितनी टोपोलॉजी होगी उससे मुझे नहीं लेना देना भैया। आप टाउ 3 बनाइए, उसके लिए अलग से बात करेंगे। आप 2 भी ले सकते हैं, वो अलग टोपोलॉजी होगी। सर मैं एम्प्टी अभी सेट भी तो सकते हैं। ओके ओके, एम्प्टी सेट भी हो सकते हैं, देखते हैं होता है। एक्स को एम्प्टी सेट के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 को एम्प्टी सेट के यूनियन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? अब एमएससी में है भैया, आप थोड़ा सा अपना मीन कुछ लॉजिक्स यूज करिए। आपको एम्प्टी सेट की डेफिनेशन मालूम है, आप वो 11th क्लास में पढ़ चुके, तो कम से कम थोड़ा सा कुछ सोचने के बाद बोलिए, ऐसे मत फेंकिए कि कुछ भी हो सकता है। पहले आप सोचिए। सबसे ये Sir, सब्जेक्ट आप X is तभी सीख another पाएंगे। base for tau 2. क्या? Sir, X is another base for tau 2. एक्स बेस है टाउ 2 के लिए। जी सर, लिख सकते X को हम यू आर यूनियन के सेइंग दिस। रूप में लिख सकते हैं। ओके, 1 को कैसे लिखेंगे? सर इसमें बी जो आपने टाउ टू लिखा है, इसके अलावा सर और कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि सर अगर एक्स से प्ले रहे तो 1 नहीं बन पा रहा है, तो अगर एक्स और 1 दोनों ले रहे हैं तो सर यूनियन करेंगे तो एक्स ही आ जाए, तो हाँ इसलिए तो सर ठीक है, तो एक्स और 1 हो गया ना, तो एक्स एंड 1 इज द बेस। एम्प्टी सेट को आप एम्प्टी यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने यूनियन लिया ही नहीं किसी का, सो एम्प्टी सेट के बारे में ज्यादा मत सोचिए, वो वैक्यूअसली ट्रू है। ओके, करेक्ट। एम्प्टी सेट इज एम्प्टी यूनियन ऑफ सर members of B, so this is vacuously true। तो एम्प्टी सेट के बारे में नहीं देखते, बाकी सेट्स के बारे में देखते हैं। बाकी जो मेंबर है टाउ 2 के, उनको क्या यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी मेंबर्स के, वो देखिए। ठीक है, तो टाउ 3 के लिए बताइए एक बेस जो टाउ 3 के अतिरिक्त हो। एक्स और हाँ, सिंगलटन यस एक्स और सिंगलटन है। तो अब आपको हल्का कुछ समझ में आया, बेस क्या है? यस सर। और मैंने आपको एक एनालॉजी दी थी ओपन इंटरवल और बेस के बीच में। तो आपको मैंने बताया था कि रियल लाइन में हमने पहले बात करी कि कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स जो है वो बेस होते हैं। ओके, तो आप कोई दो ओपन इंटरवल ले लें, B1 और B2, इनके क्या रिलेशन हो सकते हैं? B1 इंटरसेक्शन B2 एम्प्टी हो सकता है। अगर B1 इंटरसेक्शन B2 नॉन एम्प्टी हुआ तो क्या होगा? इन दिस केस ये जो B1 है वो इंटरसेक्ट करेगा B2 से, तो आपको एक और सेट, एक और इंटरवल मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो कॉल इट, एक छोटा इंटरवल मिला, इसको आप B3 नाम दे देते। तो फॉर इफ ये है देन इट्स ओके, इफ दिस then there exists B3 which is an interval contained in B1 intersection B2. Okay, and in real numbers, you know, for every, so this is some x, okay, in R. For this x you always get an interval, open interval, say x minus 1, x plus 1,
So for every x in R, there exists an open interval. Okay. Call it B1, open interval B1, such that x in B1. Okay. So, or similarly, for an open set in R, so GB an open set in R. Okay. Then for, since G can be written as union of open intervals, G can be written as union of open intervals. Okay, ये हम जानते हैं, अगर G open set है, G is an open set in R, then G can be written as a union of open intervals, BI. So कोई भी एलिमेंट आप G से उठाएंगे तो वो किसी न किसी BI में जरूर होगा. X belongs to BI, and this BI, since this G is a union of BI, this BI is contained in G. Okay, these are the properties of intervals in real in the real number. So we can extend these properties to a general topological space. So for this, I have already given you a theorem. I will here I will write it. I will not prove it, just write the statement. So here are some results that are very obvious. So we have a topological space, okay, and be a base of tau. Okay. Then if this is a base, then tau can be written as all subsets of X such that for every X in G, there exists an open set from B. Sorry, there exists a set from B, means an element of B. Call it Bx, since it depends on X. B such that X in Bx and it contained in G. So this means if you know the base, you know the topology. Okay. Similarly, we have other results. So we said, so this is first, this is second. If B a base of tau, then X can be written as union of members of this B. You take a union of all members of B, you will get X. Okay, this means union of all members of B. Okay, so this is because members of B are subsets of X. If you take union of subsets of a set, you will get the original set. Okay, this is first. Second thing, for B1, B2 in B, and X in B1 intersection B2. Okay, there is a B3 in this collection B, such that X belongs to B3 and it is contained in B1 intersection B2. This is what we have seen in case of intervals. See here. This is this property, okay? So I leave its proof to you. You please prove it.
So this is very easy. You have to use the argument that you use here. Okay, there is nothing more than that. Okay, now another result. We have a set X and we take a collection of power sets of. Okay, so B is a set of power set of X. So when I say power set, it means we are taking the discrete topology. Okay, remember this thing. So in discrete topology, we take all subsets of X, open sets of the topological space, which is called discrete topological space. Open sets are all subsets of X. Okay, all subsets of X. So, and you know, set of all subsets is called power set. Then this B satisfies number one. Union of B can be if this is the base. If okay, let me. Okay, okay. If this B satisfies the following, if B satisfies the following, number one is the union of all members of B is the set X. Second thing, for B1, B2 in B, and X in B1 intersection B2, there is B3 in B such that X in B3 and it is contained in B1 intersection B2. Then what we do, we define tau, where tau is the collection of those subsets which are unions of members of the collection B. Okay? तो इस टाउ में हमने बी के जो मेंबर्स हैं उनका यूनियन भर लिया. देन टाउ इज a topology and B is a base for tau. Okay, so this result is converse part of this. So you see, if B is a base, these two hold. If these two hold, then B is a base for this topology. Okay, so if you so in this way you may have now two definitions of basis. Number one, the one you have already seen, which says that if you have a topological space and a subcollection, say funny B of tau is base for tau if every member of tau can be expressed as union of some members of B. Okay, so this is one definition. Another definition can be okay, another definition can be this. So second definition of basis. So if X is a set, okay, a basis for a topology on X is a collection collection B. Call this collection B. Okay, of subsets of X such that number one,
So for each x in x, there exists at least one basic element. Okay, there exists b in b such that x in b. Okay, so in other words, you can say that x can be written as union of b. So both are. Secondly, if x belongs to two base elements, okay, b1 comma b2, these are in this collection b. If we have this, then there exists a b3 in the collection funny b such that x in b3 and it is contained in b1 intersection. Okay, since you know this definition gives the definition you have already seen, and that definition you saw gives this definition. These two are equivalent. Okay, you may use any. If someone asks you what is a base, then you can give either this definition or the definition that you have seen in last class. Okay, any doubt? So I will leave this as an exercise. Please see its proof. If you do not understand, then ask. So let us see some examples. Okay. So something called lower limit topology. Let us see this. So I assume that you can prove. Okay, before giving this, let me give you the usual topology. Let us discuss a base for usual topology on R. Or sometimes it is called, you all know, standard topology or Euclidean topology. Okay, so first let us see this. So take B. B is the collection of open intervals. Open intervals are of this form, where a comma b, these are real numbers and a is less than b. Okay, so number first, let us see whether this is a base or not. Okay, is a base. Is a base for some topology. Okay, we do not know the topology yet, but for some topology, whether it is a base or not. See, you, you can use this definition here. Okay, you may use this definition. You see, you have already know these things. For every x in R, there exists an interval containing that point x. Secondly, if you take two intervals b1, b2, and you take their intersection, you will again get a open interval. Okay, so these things are easy. So let us see how will you tackle this. So indeed, for every x in R, okay, there exists, say, x minus 1 comma x plus 1. This is open and it contains. Is it okay? So see here, a equal to x minus 1 and b equal to x plus 1. You may take it x minus half, x plus half. You may take it x minus 100, x plus 100. It is your choice. Or you can write just x minus epsilon comma x plus epsilon.
for some positive epsilon. Okay, is this correct? Any doubt? No. Hello. So this means for every x you have an open interval. Secondly, what you do, you take two intervals, b1 equal to a comma b, b2 equal to c comma d. Okay, if b1 intersection b2 is empty, then there is nothing to show. Okay, so we are interested where b1 intersection b2 is non-empty. We are interested here. Okay, so what you do, so what will be b1 intersection b2? Can anyone tell me? If you have a comma b, c comma d, what will be b1 intersection b2? Hello? हाँ सर 5 सर इम्पटी सेट अरे होगा। भाई, मैं यहाँ पर मान के चल, आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या? यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं हम, देखिए आप लोग सुन ले, या तो मुझे सुन नहीं रहे हैं या फिर आप लोग कुछ साथ में और भी काम करने जा रहे हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। सर बीसी हो सकता है इंटरवल। हाँ, मीन बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन क्या हो, देखो बीसी तो ए बी, बीसी हो मुश्किल है ना, ये बी है ये सी है, ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीसी होना तो बहुत ही मुश्किल है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे बीसी हो ही नहीं सकता। क्या देखो बहुत सारे केसेस बनेंगे, ए कमा बी, ये बी है और ये सी कमा डी है, इस केस में तो सी कमा डी बना, ये सी कमा डी है, ये ए कमा बी है, इस केस में ए कमा बी बना, ये ए कमा बी है और ये सी कमा डी है, इस केस में सी कमा बी बना। ठीक है, तो इनको देख के आप कुछ बता सकते हैं? ओके, what we do, we first define p. Let us say p equal to maximum of a comma c. जो भी a और c में से बड़ा है उसको p नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये c बड़ा था तो इसको p दे देंगे नाम, यहाँ पर a बड़ा था इसको p नाम दे दो, यहाँ पर c बड़ा था इसका नाम p दे दो। ओके, तीनों केस में मैं सबको एक साथ मिला रहा हूँ, तो आप उसको देखिए। q इक्वल टू मिनिमम ऑफ सी का सॉरी बी कॉमा डी। ओके, तो इस केस में ये डी जो है वो मिनिमम था, तो यहाँ इसका नाम क्यू दे दूंगा। इस केस में बी मिनिमम था तो इसका नाम क्यू दे दिया, यहाँ पर भी बी मिनिमम था, इसका नाम क्यू। सो यू सी दिस पी कॉमा क्यू, देन दिस पी कॉमा क्यू इज एन ओपन इंटरवल and it is contained in a comma b. Also p comma q is contained in c comma d. Okay, this implies this p comma q is contained in a comma b intersection c comma d. Okay, so for every x in, so this was our b1, this was b2, b1 intersection b2. Okay, what we have a less than x and c less than x, and since this p is maximum of these two, this implies p is less than x. Okay, similarly x is less than b and x is less than d. Therefore this x is minimum of these two, so this is less than q. So this implies from this and this p less than x less than q.
So from here, this X belongs to P comma Q. And we have already seen above that this PQ is contained in B1 intersection B2. This is your B3. Sorry, B3. So in this way, you have shown using this definition, you have already shown for each X, there exists an interval, open interval, such that X belongs to an that open interval. And in second case, in second condition, you showed that if X belongs to in the intersection of two open intervals, we will get an open interval B3 such that X belongs to B3 and that B3 is contained in B1 intersection B2. This is what we have shown here. So in this way, this B is a base for some topology. Okay, we do not know that topology, but what we know is this B is a base for some topology. That topology is called the usual topology. Okay? The topology generated by this B is called the standard or the usual or the Euclidean topology. Okay, it has three names. Any doubt? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? हेलो? अच्छा, तो मैं मान रहा हूँ कि नहीं प्रॉब्लम है. Okay, so now we give another topology. We have another topology. Its name is lower limit topology. Okay. आपको ये नाम याद रखने क्योंकि ये बार बार आएंगे और ये बहुत जरूरी हो जाते हैं. कभी कभी आप लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे काउंटर एग्जांपल्स के लिए. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमको कुछ सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि जो इंटीग्रेशन में करते थे या डिफरेंशिएशन में करते थे, ऐसा कुछ नहीं है. आपको कुछ लॉजिक्स जैसे आप ग्रुप थ्योरी में करते थे ऐसा कुछ है. ठीक है, आपके पास कुछ एग्जाम्स हैं, उनका यूज करना है और थ्योरी बिल्ड करनी है. ओके, सो लीनियर अलजेब्रा में आपके पास दोनों तरह का था. आपके पास कुछ एग्जाम्स थे, उनका यूज करना था और कुछ टाइम आपको जैसे कभी डिटरमिनेंट निकालना हो जाता था, कभी कुछ इस तरह से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी थी, तो वहां आपके पास कुछ था जिसे आप कंप्यूट करते थे. यहाँ पर कंप्यूट ऐसे एच नहीं करना है, यहाँ पर आपको एनालिसिस ज्यादा करना है. ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा वाला एनालिसिस नहीं, यहाँ पर कुछ एक्सियोमेटिक एनालिसिस आपको करना है. सम you have some axioms, you have to use them. Okay, so now we define, so we have again we are working on the set of real numbers R. Here we define BL. This L stands for lower limit. Okay, lower limit means एक जो नीचे वाली साइड है वहां से ये बंद है, लिमिट है इसमें. ओके, ए बी अब. So this is a semi-open interval which is closed from left. Okay, A comma B both in R and A is less than B. So this is a collection of semi-open intervals which are closed from the left, or we can say it is closed from lower. So this is a, so we have to show that this is a base for some topology. So that BL is a base for some topology. Okay,
और जो भी टोपोलॉजी ये जनरेट करेगा उसको हम कहेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो रिमार्क, द टोपोलॉजी generated by EL is called the lower limit topology. Okay, so let us see why this is a base. हमें यही दो चीज अभी हमने ऊपर किया है यही सेम करना है, ठीक है, जो भी यहाँ पर किया है ये हमें करना है। तो क्लियरली नंबर फर्स्ट, क्लियरली x can be written as union of BL। इसका दूसरा तरीका क्या है, कोई भी आप एलिमेंट लें R से, तो देयर एग्जिस्ट B which is x comma x plus 1, okay, in BL such that x belongs to B. You see, x is an element of this interval, okay. So first condition of the हेलो second definition, हाँ हेलो बोलो, कौन बोल रहे, नाम बताओ अपना। हेलो, अरे बोलिए भाई। हेलो, हेलो हाँ अपना नाम बताइए और फिर अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं आपको सुन पा रहा था, आपने कुछ बोला नहीं, आप हेलो कहने के बाद रुक गए। आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। क्या मैं आप सबको सुनाई दे रहा हूँ? एम आई ऑडिबल? यस सर। कोई क्वेश्चन डाउट है अभी? डाउट है तो पूछिए, वहीं पर टोकिए जहां पर डाउट है। हेलो, ओके, कोई डाउट नहीं है मालूम है। तो आप देख रहे हैं ये पहली जो सेकंड है यहाँ की, इसका पहला वाला पार्ट ट्रू है, सेकंड पार्ट भी ट्रू होगा, वो इजीली हम देख पाएंगे। आप कोई दो टेक टू elements from this BL, B1 comma B2 in BL, तो उनको आप ये ले लो A comma B and C comma D. Now this is B1, this is B2, okay. So assume there exists X in B1 intersection B2, okay. This means B1 intersection B2 is non-empty, okay. अभी देखते हैं, ये B1 था A comma B, B2 क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। एक मिनट, एक ये चॉइस आपके पास हो सकती है, आपके पास दूसरी चॉइस हो सकती है कि ये तो B2 है, ओके, B1 इसके अंदर हो, और तीसरी वाली चॉइस भी ऐसी कुछ हो सकती है, B1 बड़ा है B2 उसके अंदर है, ठीक है। तो सेम जो आपने अभी किया था, what you do, you define P equal to maximum of A comma B and Q equal to minimum of C comma D, okay. Then you see this P comma Q, this interval, call this B3, okay, call this B3,
this is contained in B1 intersection B2. Okay. Why? Because this P is greater than equal to A and P is greater than equal to B, and from this Q is less than equal to C and Q is less than equal to D. Okay. And oh, I have done a mistake here. So sorry for the mistake. Take maximum of A comma C and Q equal to minimum of B comma D. Okay. So from here you get it. Now this A is less than equal to P and Q is less than equal to B. Okay, so from this, what you get, A less than equal to P less than Q less than equal to B. So this means P comma Q is contained in A comma B. Okay. Similarly, P comma Q is contained in C comma D. Open and D. Okay. So this implies P comma Q contained in an intersection. Now, if you take any X in B1 intersection B2, then this X is less than equal to A and this is of this form. Okay, so this X is less than B and C is less than X and X is less than D. So this is what we have. So from these two, P is less than equal to X. From these two, X is less than Q. So what we have, P less than equal to X less than Q. This implies X belongs to P comma Q. And it is contained in B1 intersection B2. Call this PQ as B3. So in this way, you have seen that this BL satisfies the second condition of second definition of base. Okay. So this implies BL is a base for some topology. Okay. Correct or not? And the topology which is generated by BL is called lower limit topology, or sometimes it is called Frozen-Frey line. This RL, which is the topological space R comma topology generated by BL is called Frozen-Frey line. Okay. Similarly, you have upper limit topology, and then you may. I have only 1 minute now. Should I do? Okay, let me give you another example. Okay. That is called K topology. So may I take 5 more minutes? Hello? Yes. क्या मैं 5 मिनट ले सकता हूँ आपके? और सर क्लास है इसके बाद? वो कैसी क्लास होगी? वो ऑनलाइन ऐसे ही होगा या फिर किस तरह से है उसमें?
नहीं तो सर, अगर इस आप तरह से 5 मिनट देते हैं तो मैं एक एक एग्जांपल और आपको दे सकता हूँ। ले लीजिए। ओके ठीक है, आपकी क्लास है तो सर कंटिन्यू कर लीजिए, वो अभी टाइम लगे क्लास शुरू होने में। लगेगा ना टाइम, मैं तो तक दे देता हूँ एग्जांपल। सो K topology, so this is also in R, means the set of real numbers. Take x equal to R and we define K as 1 by all such numbers 1 by n, where n is a positive integer. Okay, so this means here what you have 1 comma 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and so on. Okay, this is your K. Now we define a collection of subsets of R. We call that collection BK. In BK we have subsets of R. Okay, B is a subset of R. B can be an interval, open interval, where either B is an open interval or B can be open interval minus this set K. Okay, here A and B both real numbers and A is less than B. Okay, this is BK. आपको मालूम है बीके में कैसे एलिमेंट है, बीके में कैसे सेट्स हैं, या तो वो ओपन इंटरवल होंगे या वो ओपन इंटरवल में से इस के को माइनस कर दिए होंगे। ओके, कैसे, के क्या है पहले रियल लाइन में देख लेते हैं। के एलिमेंट को मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। ओके, उससे पहले मैं यहाँ पर 0 बना लेता हूँ आपके लिए। ये 0 है और ये यहाँ पर 1 होगा। तो के में 1 है, 1 by 2 है, 1 by 3 है, 1 by 4 है, 1 by 5 है एंड सो इसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करें तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर 1 था, दिस इज 1, दिस इज 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 एंड उसके बाद तो वो कलेक्टर होता जाएगा, आपको मालूम है। ठीक है, तो दिस इज के। तो यहाँ पर कलेक्शन कैसे है, बी बी या तो ये पूरा का पूरा इंटरवल है। अगर इसको मैं बी कहूं, बी माइनस के, फिर से यही होगा। अगर मेरा बी जो इंटरवल है वो इसको इंटरसेक्ट करता है तो मैं बी माइनस के कर पाऊंगा। या तो ये पूरा का पूरा ये इंटरवल वहां पर है या उसमें से ये पॉइंट माइनस। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स हैं बीके में। So first show that BK is a base. So that BK is a base for some topology. Okay. अभी BK में सारे के सारे ओपन इंटरवल तो हैं, तो कोई बात ही नहीं है कि पहली कंडीशन बेस की जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना करे। तो कोई भी एलिमेंट आप R से उठाएं और B को आप बोले कि x minus 1 x plus 1 है। Okay, since this is an open interval and open intervals are members of BK, so this means x belongs to B and this is in BK. So पहली condition satisfied, or you may write R as union of BK. Okay, there is nothing to prove, so it is obvious. So ये proof मैंने आपको दे दिया। Second thing, वही इंटरसेक्शन वाला, आपको क्या करना है, दो 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 एलिमेंट लेते हैं B1 and B2 in BK. Okay, so we have to show that this B1 intersection BK is, sorry, B1 intersection B2 is again in BK. Okay, तो ये देखना भी इजी है, सेम जैसे पहले किया था हमने। इसको देख लेते हैं।
अगर आपके पास B1 एकम दोनों ओपन इंटरवल है, B1 B2 इस फॉर्म का है, तो आप जानते हैं B1 इंटरसेक्शन B2, इसको मैं नॉन एम्प्टी लेके चल रहा हूं, ठीक है, नॉन एम्प्टी। देन we have already seen that B1 intersection B2 is in BK, ये फिर से एक ओपन इंटरवल होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। और कैसे जानते हैं, इसको लिख लेते हैं। हाउ? बिकॉज take P equal to max of A comma C, Q equal to minimum of B comma D, then P comma Q is B intersection B2. Okay. Second case, if B1 equal to open interval AB, लेकिन B2 क्या है, ओपन इंटरवल ना होके वो दूसरे फॉर्म का है, किस फॉर्म का, किस फॉर्म का, ये वाले फॉर्म का, ठीक है, B इक्वल टू C कमा D माइनस K, इस फॉर्म का है। What about B1 intersection B2? This is same as, ओके, जब ये इस फॉर्म का जब आएगा, वो आपको मालूम है केवल और केवल वो इंटरवल्स होंगे, वो सेट्स होंगे जहां पर ये वाला पार्ट, इसका पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कोई ना कोई पार्ट, ओके, या इस फॉर्म का होगा, तभी जाके वो यहां पर आएगा, ओके। So B1 intersection B2 is again P comma Q minus A, where P is maximum of A comma C, Q equal to minimum of B comma D. ये देखना भी इजी है, आपने A comma B लिया और C comma D यहाँ पर लिया, और इसमें से K को माइनस किया आपने, मान लो K ये वाले पॉइंट है, इनको माइनस किए हैं, ठीक है, ये पॉइंट माइनस करें, तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ये है, इसका नाम हमने P दिया था, इसका नाम हमने Q दिया था, और उसमें से ये जो K के एलिमेंट है उनको हम ओमिट कर देते हैं, तो PQ माइनस K। केस थर्ड, केस थर्ड इज B1 इज A comma B minus K, B2 is C comma D minus K, okay. Same with P and Q, P is maximum of A comma C, Q is minimum of B comma D. We have B1 intersection B2 is P comma Q minus K, okay. So this is again in BK. In this way, we have seen that BK is a base for some topology, base of some topology tau K on R. This tau K is called K topology on R. Okay, tau K is called K topology. Okay, so here is an exercise for you. अगर आपको याद हो, हमने टोपोलॉजी के बारे में बात की थी, स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी, वीक टोपोलॉजी, फाइनाइट टोपोलॉजी, कोर्सर टोपोलॉजी, ऐसी कुछ बातें करी थी। अभी आपके पास एक सेट एक्स है जिसे हम सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं। यहाँ पर हमने तीन तरह की टोपोलॉजी बनाई। दिस इज यूजुअल टोपोलॉजी, देन वी कंस्ट्रक्ट टाउ एल, दिस इज लोअर लिमिट टोपोलॉजी, then we construct tau k, which is K topology. Okay, now exercise is find the relation between tau, tau L, tau k, whether these are comparable or not. If they are comparable, which is coarser, which is finer. Okay,
So this is an exercise for you. Okay, I'll stop here. मैंने आपको 5 बोला था लेकिन ये 10 मिनट हो गया. Sorry for that.